साथ है दिल का ये हाल। तेरे नाल जीना मैनू, तेरे नाल मरना मैनू, तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल जीना मैनू, तेरे नाल मरना मैनू, तेरे नाल, तेरे नाल। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। तेरे नाल जीना मैनू, तेरे नाल मरना मैनू, तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल जीना मैनू, तेरे नाल मरना मैनू, तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल नाल, तेरे नाल नाल जीना मैनू, तेरे नाल, तेरे नाल नाल, तेरे नाल नाल जीना मैनू, तेरे नाल, तेरे नाल नाल, तेरे नाल नाल जीना मैनू, तेरे नाल, तेरे नाल नाल, तेरे नाल नाल जीना मैनू, तेरे नाल। Thank you so much. You all can just follow me on Instagram, singer हिमांशु ऑफिशियल। नेक्स्ट मंथ मेरा एक टी सीरीज से सॉन्ग भी आ रहा है, सो सिंगर हिमांशु ऑफिशियल। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कले आज ही नहीं लगना, साडा कले आज ही नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, है दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस यह है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवाज आवा ते मैं यारा नू बनावा, आवाज आवा ते मैं यारा नू बनावा। रात कली एक ख्वाब में आई
और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुए। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुए। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख बोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए। कैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कहे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों। कम वक्त इनसे भी खूबसूरत। एवरीवन आई लव यू हे आई लव यू हो आई लव यू हे। दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए। कैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कहे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों। कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। आई लव यू हे आई लव यू हो आई लव यू हे। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। मैं तेरा हो जाऊं तो तू कर दे इशारा। वो करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। Thank you so much. ये तो सबको आता है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। एवरीवन तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला।
तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। सब लोग नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मस्ती के साथ सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। एवरीवन सीपियों की ओट में तू बसा है उस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। एवरीवन नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। Anxiety, depression, blood pressure, sugar. Anxiety, depression, sugar, blood pressure, thyroid. Very common in every person, in every home. Am I right? Yes. So revolving around doctors, hospitals and medications. Solution is yoga. Whenever we do yoga, we exercise, we meditate, whole our body, mind and soul gets energized, regulated and controlled. No depression, no stress and happy life. So, let's start our International Yoga E-Conclave. Let's start our International Yoga E-Conclave, which is happening today and tomorrow at Delhi College of Arts and Commerce. Namaskar, good morning, Adab, Sat Shri Akal to one and all present over here and all our special guests and dignitaries who will be coming and who is already there. A very warm welcome to all the special guests and all the students and teachers present over here. I, Alankrita, is your host and moderator for the two-day event. An event is organized by Paramath Niketan, Rishikesh, Indian Yoga Association, Youth News Online, in collaboration with IQAC of Delhi College of Arts and Commerce, supported by Morarji Desai National Institute of Yoga, Sri Mangalam College of Law and Management,
College of Naturopathy, Sivananda Yoga Vedanta Nataraja Center, Global Institute of Blissful Life, Instruction Service and Security on Blissful Life, Ekam Yoga, Vyasa Canada, the Hindu Temple Burnby, European Yoga Federation, Toon, Vidyapeeth Dehradun, Yoga Vidya Dham, ICYER Ananda Ashram Pondicherry, Purna Yog Advait School. The program is streamed live on www.tinyurl/youthnews1234 and Indian Yoga Association page. So these are the associations we are having with. Yoga is not a religion, it is a science. Science of well-being, science of youthfulness, science of integrating body, mind and soul. So let's initiate and inaugurate the event with lightening of lamp. So I would like to call upon stage Himanshu Sharma ji, the famous singer from Art of Living and T-Series, to present his performance before you. Everybody. शिवदा हूँ शिव मैं और क्या मांगू शंकर से मेरे बिन बाबा ने किए मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिवदा हूँ शिव शिवदा हूँ शिव मैं शिवदा हूँ शिव मैं और क्या मांगू शंकर से मैं और क्या मांगू शंकर से मेरे बिन बाबा ने किए मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिवदा हूँ शिव मैं शिवदा हूँ शिव मैं शिवदा हूँ शिव मेरे मैं शिवदा हूँ शिव मेरे मैं शिवदा हूँ शिव मेरे मैं और क्या मांगू शंकर से मेरे दिन बाबा ने किए हैं मैं और क्या मांगू शंकर से शिवदा हूँ शिव मैं शिवदा हूँ शिव मैं शिवदा हूँ शिव मेरे मैं शिवदा हूँ शिव मेरे थैंक यू सो मच A big round of applause for Himanshu Sharma ji. He is national and international singer representing India abroad. So let's inaugurate the session. A lamp does not speak. It introduces itself through its light. Achievers never expose themselves, but their achievements expose them. So let's inaugurate the session with lightening of lamp. And for this, I would like to call upon stage Yogacharya Shri Vipin Joshi ji to please come up on the stage, and please big round of applause for all the dignitaries
Rajiv Kapoor ji, Professor Dr. Rajiv Chopra ji, and Miss Atika Dandia ji to please come up on the stage for lightening of lamp. Please ma'am, please sir. I would like to request all our dignitaries and special guests to be seated over here on the stage. Thank you ma'am and thank you sir. Please, big round of applause for lighting of lamp. Now I would like to invite Mr. Himanshu Pandey, Editor-in-Chief, Youth News Online, newspaper and news portal. Without him, the program would not have been possible. To welcome our guests, Himanshu Pandey ji. थैंक यू सो मच ऑडियंस। मुझे देख के ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि आप लोगों के उत्साह में कहीं कमी है। एंड वी स्टार्टेड दिस इवनिंग दिस मॉर्निंग 5-10 मिनट्स लेट। वी आर लाइव स्ट्रीम ऑन द फेसबुक पेज www.tinyurl.com/news1234। Now to begin with, I would like to welcome you all on behalf of Amarth Nigetan Ashram, DCAC College, the IAC
आपसे कि ये इवेंट लाइव है www.tinyurl.com/youthnews1234 पे। इसको जितना से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, ये वेलनेस इवेंट है तो सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने होस्ट से अनुरोध करूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। Thank you, Himanshu ji, for welcoming all our special guests. Now, the first dignitary who will be speaking over here is Dr. H.R. Nagendra ji. He is Padma Shri awarded and he is Yoga Guru of Prime Minister Narendra Modi ji. Currently, he is the Yoga Guru of Prime Minister Narendra Modi ji. So, he will address the audience virtually. So, you can see him virtually. President Indian Yoga Association and Chancellor of S. Vyasa University, Dr. H.R. Nagendra. Sir, is being celebrated throughout the country. Year after year, the number of people participating in the International Day of Yoga is increasing. It was 18 crores of people who practiced last year. This time, the Ministry of Culture has taken the target to have 45 crores of people throughout the country. This is happening. Thanks to our honorable Prime Minister Narendra Modi, who has pushed yoga every ministry. And this year, dynamic Minister Ayush has said we will have 100-day celebration, 100 days before. As they launch the ministerial meeting in the morning, we invite all the ministerial persons to take up the yoga. And a big program in Brentford, organized, thousands of people gathered, and can all they as well do the practice for 100 days. And the International E-Yoga Congress is association with Indian Yoga Association. Dharma Ketan is being organized on 10th and 11th June, where Delhi College of Arts and Commerce, the Delhi University in New Delhi, between 10 a.m. to 1 p.m. And organizers, headed by Himanshu Pandey, the Youth News Online, is going to do that. And what a pleasure it is to see that even the media has coming up in a big way to spread this message of yoga. Why? People have started realizing that yoga has a message for all. Yoga has the benefits to everybody in the society, starting from the child, cradle to the grave, as somebody said. Not only for dealing with modern non-communicable diseases, not only deal with infectious diseases and virus diseases like COVID and others, can bring transformation of the people, raise to their bottom level, become great, super, divine human being, reach that fantastic level of total perfection. The state, which is known as Kaivalya by Patanjali, Moksha in the Gnana Yoga, in the Upanishad, absolute reality according to science, the state is infinite knowledge, infinite power, infinite freedom. It is beyond space-time transition. It is beyond mana, buddhi, chitta, ahankara. That is the state of absolute silence. The state of no mind knows. That is our original state. That is the original state from where we all have taken birth. He said, this is a technical term called Paramatman, Atman of all of us, the self of all of us, and each one of us is the individual self.
you, sir, for your presence virtually. It means very much for us, and thank you so much for coming in our show. And the next speaker is Shri Subodh Tiwari ji. Shri Subodh Tiwari ji was born in the yogic atmosphere at Kaivalya Dham, Lonavala, Pune. He is the Secretary General of Indian Yoga Association, IYA. At the young age, he received spiritual initiation from Swami Digambar ji, the director and spiritual head of Kaivalya Dham Yoga Institute, and began practicing yoga under the guidance of his father, Shri O.P. Tiwari ji. He is a famous, renowned yogic teacher at Kaivalya Dham, Lonavala, and he is here with us online. You may ask questions also after his virtual addressing the people. Subodh Tiwari ji. Yogic
drop of a hat, it does not make sense. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. Does not make sense. We might be great learned people, but when we are very happy, we tend to promise out of the world. Doesn't make sense. So friends, I believe a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. It does not make sense. We might be great learned people, but when we are very happy, we tend to promise out of the world. Lot of focus doesn't make sense. So friends, I believe a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. It does not make sense. We might be great learned people, but when we are very happy, we tend to promise out of the world. Lot of focus doesn't make sense. So friends, I believe a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. It does not make sense. We might be great learned people, but when we are very happy, we tend to promise out of the world. Lot of focus doesn't make sense. So friends, I believe a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. It does not make sense. We might be great learned people, but when we are very happy, we tend to promise out of the world. Lot of focus doesn't make sense. So friends, I believe a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. It does not make sense. We might be great learned people, but when we are very happy, we tend to promise out of the world. Lot of focus doesn't make sense. So friends, I believe a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. But when we are very happy, a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react to any situation where we are made angry. Full for the organizers to have been. But when we are very happy, given me this opportunity, and I wish you all the best. May a drop of a hat, it does not make sense. Enables us to build that willpower, enables us. We might be very, very great practitioners, but we still react. Honored to have you here as a dignitary, and giving your precious time to us is definitely very, very special for us. You talked about 360-degree yoga, transformational effects, willpower, and intellectual powers that we get through yoga. As the sir said, thank you so much, sir. And now, proceeding next, we have His Highness Swami Chidanand Saraswati ji, all the way from Parmarth Niketan, Rishikesh. He is the advisor and member of Governing Council of Indian Yoga Association. He is the president of Parmarth Niketan Ashram, Rishikesh, and world-renowned spiritual abode located on the banks of the national river Ganga in the lap of sacred Himalayas. He founded and chaired the Global Interfaith WASH Alliance, world's first ever initiative to bring together the leaders of all world's major faiths to enable water secure future
where all may have access and safe and healthy water, sanitation and hygiene. WASH stands for Water Sanitation. He founded and chaired the Global Interfaith WASH Alliance, world's first ever initiative to bring together the leaders of all world's major faiths to enable water secure future where all may have access and safe and healthy water, sanitation and hygiene. WASH stands for Water Sanitation. He founded and chaired the Global Interfaith WASH Alliance, world's first ever initiative योग दिवस से पूर्व together the leaders of all आप योग दिवस को मना रहे हैं ताकि लोगों को जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें। और उसमें भी अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर नागेंद्र अंधेरी रात है तब भी योग का प्रेम उनका देखे कि वहां से भी जुड़े हुए हैं। केवल्य धाम के आप योग एक महारत्न योग के क्षेत्र में जो सचमुच पूर्ण रूप से समर्पित हैं, आदरणीय श्री सुबोध तिवारी जी, और उसमें भी अमेरिका में बैठे आदरणीय श्री बसवा रेड्डी जी, डॉक्टर नागेंद्र हिमांशु जी पांडे और अंधेरी रात है, जितने भी अलंकृता उनकी देवी और एक महारत्न सामने बैठी है सर्व योग वाली। अमेजिंग, यू आर आल्सो हियर तिवारी जी। और आप सब पता इतने सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं। हमारे शर्मा जी भी बैठे हुए हैं और अभी मुझे क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर आल्सो हियर फ्रॉम सर्व योगा and सर्व योग वाली। So many people from all over the world are connected through this webinar. To me, yoga is unity. Yoga is union. It connects us. It brings us together. And this is a great opportunity for all of us when our Honorable Prime Minister of India brought yoga to the world just for one purpose, that how we can be one family, how we can be together, how we can work together in the yoga community also. Sometime I see everybody is doing their own yoga, is great. But at the end, we should be living yoga also in such a way that we are all one and one family. We should cooperate with each other. We should not compete with each other, but cooperate with each other. तो पहला सुख तो योग के अगर कहते हैं हमारे यहाँ योग से जुड़ने के लिए पहली मूल बात है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। तो योग ने तो कमाल कर दिया, काया को भी सुखी बनाती है, अब माया भी आने लग गई। तो काया और माया के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि योग खो जाए, योग ना खो जाए, फिर काया भी मजबूत बने, मन भी मजबूत बने और साथ ही साथ घर में माया भी आए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन माया की वजह से हमें काया को नहीं खोना है, माया की वजह से केवल योग को नहीं करना है। और आज माया की आवश्यकता है, काया की भी आवश्यकता है, लेकिन योग का प्रयोग जो है वो भीतर को स्वस्थ, तन को स्वस्थ बनाने के लिए हो और मन को मस्त करने के लिए हो। और मन मस्त है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं देखो भैया, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, योर मस्ती मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर। और इसलिए मस्ती होनी चाहिए जीवन में, व्यस्त कितने भी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसके लिए रात को अच्छी नींद लेनी हो, दिन को अच्छा जीवन जीना हो और रात के सपनों में भी आपको शांति मिले, इसके लिए योग करो और रोज करो और फिर मस्ती ही मस्ती है। और क्योंकि जिसकी कई बार मैंने देखा है बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उनमें मस्ती भी हो। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है,
बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। देखो, अपने जीवन को आप मस्त बनाएं, इसके लिए बॉडी, माइंड और सोल, जब इन तीनों का संगम हो जाएगा तभी योग होगा। और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये योग के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी देखना है। योग जो हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषियों की हजारों वर्षों तक जो तपस्या की है उन्होंने, उनकी तपस्या का परिणाम है ये योग। क्योंकि योग न केवल शारीरिक आसनों का एक समूह है, बल्कि शरीर का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से संयोग कराता है। और फिर प्राणायाम जोड़ दो तो बल्ले बल्ले। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम, प्राण अर्थात जीवन शक्ति, और आयाम का अर्थ है ऊर्जा पर नियंत्रण कैसे हो। तो प्राणायाम का अर्थ है हमारी भीतरी ऊर्जा जो है, जो व्यर्थ हो जाती है, हमारे प्राण ऊर्जा भी व्यर्थ में लगी हुई है। बोले नहीं, भीतर उतरो, गहरे उतरो और उसमें भीतर उतर के प्राणायाम से एक हो जाओ, और फिर प्राणायाम की ऊर्जा प्राप्त करके संसार की ऊर्जा को प्राप्त करो और संसार में अपनी ऊर्जा को समर्पित कर दो। यही सबसे बढ़िया योग है। योग से जीवन में मैंने तो देखा है कितने लोगों को बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में हुआ। और आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक जो भी आपको परिवर्तन चाहिए, उस पद्धति के लिए, उस परिवर्तन के लिए, उस जीवन पद्धति में एक चीज अपना लीजिए, वो है योग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दोनों स्थितियों में योग बैलेंस क्रिएट करता है। और योग का अर्थ ही बैलेंस्ड है। युक्तः का अर्थ है बैलेंस। युक्ताहार विहारस की जब हम बात करते हैं, उसका अर्थ ही है बैलेंस। युक्ता माने बैलेंस्ड। जो बैलेंस थे, आज सबका बैलेंस खोया हुआ है। तो वी नीड ए शिफ्ट। उस शिफ्ट में बैलेंस बहुत बड़ा काम करता है। और योग के साथ साथ अगर मौन भी जोड़ लें, ध्यान भी जोड़ लें, तो फिर तो बस जिंदगी संवर जाएगी, बिखरी हुई जिंदगी निखर जाएगी। दूसरी बात, ये जो तनाव है, जिसको देखो स्ट्रेस, जिसको देखो छोटे छोटे बच्चे, यू नो आई एम वेरी स्ट्रेस, ले हद हो गई है। तो छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस्ड हैं। तो आज के स्ट्रेस पूर्ण जीवन में, प्रदूषण और भाग दौड़ की जिंदगी में जीवन रोग ग्रस्त होता जा रहा है। बल्कि बच्चे, जवान बच्चे पढ़ लिख के 6 फिगर में कमा रहे हैं, लेकिन अपनी फिगर का पता नहीं है। ये एक बड़ी मुसीबत है। अपनी फिगर खो गई, लेकिन 6 फिगर, 5 फिगर में बस पैसा पैसा पैसा। पैसा भी कमाओ, लेकिन साथ साथ अपने जीवन को भी कमाओ। और उसके लिए योग और ध्यान आपके जीवन को अद्भुत अद्भुत परिवर्तन ला देंगे। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं। वो खुद कहते हैं, सच्ची बात तो ये योगा कर्मसु कौशलम। योग है क्या? बोले अपने कर्मों को बढ़िया ढंग से करना, पुटिंग योर 100% इन योर कर्मा, वट एवर यू डू, वही तो योग है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में जो बैलेंस क्रिएट कर दे और आपको एक श्रेष्ठ जीवन प्रदान कर दे, यही तो ऋषियों ने कोशिश की और यही तो इतनी बढ़िया गिफ्ट दे दी उन्होंने। और इसलिए आजकल बदलती जीवन शैली, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना जीने का टाइम, ऐसे में अपने जीवन में योग का बैलेंस लाके, योग के मंत्र से जल्दी सोना, जल्दी उठना, और फिर जो भी खाना, वो ऐसा खाना जो आपको बीमार ना बनाए, आपको रोगी ना बनाए, आपको योगी बनाए। और फिर योगी होने का एक और दूसरा अर्थ है, वो है कि जो आपको एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार करे, सहयोगी बनाए, उपयोगी बनाए, उद्योगी बनाए, और फिर आता है कि योगी बनाए। इसलिए आओ एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। समाज में बहुत कुछ बिखरा हुआ है और योगियों का काम है उन सबको जोड़ना। अंतिम बात जो बहुत जरूरी है वो है हमारी प्रकृति। योग हमारा कल्चर है, हमारी जीवन शैली है, लेकिन नेचर को भी हमें साथ लेके चलना होगा। वी नीड ग्रीन योगीज,
आज की दुनिया में ग्रीन योगी चाहिए जो योग के साथ साथ ये लेसन दें जब तुम क्लास कंप्लीट हो कि देखो भैया तुम इतनी देर योगा करोगे, 45 मिनट का योगा या 1 घंटे का योगा, अगर 45 मिनट से 60 मिनट का योग कर रहे हो रोज, तो इतने पेड़ भी कम से कम 1 महीने में लगाओ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए आइए अपने जीवन को योग में बनाने के लिए, वो योग जो एक जीवन की कला है, जो हमें पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है, मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, जिससे मन शांत और बैलेंस रहता है और तनाव और चिंता से मुक्त रहता है। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? ये इम्यूनिटी बूस्टर है और आपका स्ट्रेस बस्टर है। इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए, जीवन को मस्त रखने के लिए आओ करें योग और रहें निरोग। योग करो, रोज करो और मौज करो। सबको मेरी शुभकामनाएं मां गंगा के पावन तट से। आइए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम सब मिलकर जहां भी हो चक दे इंडिया, चक दे योगा, बस कमाल कर दें कि जिसको देखो योगी करता हुआ मिले। धन्यवाद। जय गंगे, जय योगा, जय भारत। जब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, तो जितने भी लोग योगा से कनेक्टेड हैं, बड़े बड़े दिग्गज जितने भी हैं, उन सबके पास समय नहीं है, फिर भी आपने समय निकाला, हमें समय दिया और निरोगी काया और घर में माया जो सभी को चाहिए उसके बारे में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस Atika Dandiya ji. She is physically present over here. Atika Dandiya ji is a transformational executive coach, image and personal branding expert, TEDx speaker, yoga, meditation and wellness coach. She has also been appointed by Ministry of Tourism as a board member to promote yoga and wellness in India and abroad. Her skills lies in understanding the human mind and teaching people the art of being happy, balanced and energetic. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस नहीं है, एनर्जी नहीं है। मैम is there in line with her passion and concurrent to her image building expertise. Atika ji serves as an international faculty member and director training for the Art of Living Foundation. Ma'am, I welcome you here. Am I audible? Yes. Great. So it's a great honor to be here, and thank you so much for inviting me and being such a patient audience. So first, can you clap for yourselves? And I'm delighted to be in the presence of Param Pujit dignitaries on Zoom. Yeah, I can't see them, but they can see me, and I'm just delighted to be a part with all of you because I have learned so much from you in yoga as a way of life. Yes. Today I represent the Art of Living Foundation, and I have learned a lot from the Shri Shri Yoga which I practice. Those of you who are on Zoom, you cannot see us, but right now I'm standing in front of a very young audience. Yes, there are a lot of young people, and today being Yoga Day, I really wanted to talk in Hindi. Yeah, yoga हमने निकाला, इंडिया से निकला, है ना? लेकिन I will continue talking in English because we have dignitaries from all over the world. All right. Talking to you guys because this young audience sitting in front of me, and I have just about 8 minutes left now. I want to give you something special before I go. So the buzzword these days is in the corporate world, the student world, is something called the executive presence. Have you heard of this word? Executive presence. Corporate world, executive
like to read verbatim what Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji has said about Yoga Karma Sukashila. He says, if you are skillful, you have followed principles of yoga, especially Yoga Karma Sukashila, in some form, somewhere in your life. मतलब अगर आप skillful हो, अगर आप में कुशलता है, तो आपने कुछ न कुछ योगा के नियमों का पालन किया है, कहीं न कहीं किसी प्रकार से भी अपने जीवन में. Whether it is yama, niyama, pranayam, dhyan, meditation, whatever you have done, you have practiced that in your life. Yeah? And what it means is, most of the times when we interact with each other, when we are working with each other, we spend so much of energy. Yeah, we are all into achieving some goals in life. हम चाहते हैं कि हमने जो गोल निर्धारित किए हैं अपने लिए, हम उनको अचीव करें. लेकिन इन गोल्स को जो अचीव करने में जो एनर्जी स्पेंड होती है, the amount of energy that we spend in trying to achieve this goal, when we achieve the goal, when we achieve the fruit of action, we are totally exhausted. There is no energy left to enjoy it. Have you experienced that? Yes? Yeah? जो अचीव करना था, पूरी एनर्जी उसमें निकाल दी उसको अचीव करने के लिए, और जब उसका फल सामने आया, तो उसको एंजॉय करने के लिए कुछ एनर्जी ही नहीं बची. इस स्कैटर्ड एनर्जी को वापस अपने अंदर डालना, do it. To put this scattered energy back into yourself is actually doing it. And that is a skill of energy. How this drained out energy can be put back into you, and how you can revive yourself, how you can energize yourself through yoga is not just asanas, by the way. It is not just, people think it's just some exercise on the yoga mat. It is much beyond that. It is how you do the asanas, after that how you do the pranayamas, after that how you meditate. Yeah? And meditation is not concentration on some point here, or on some God sitting up there. Meditation is deconcentration. It is the art of letting go. So do you know that? Yes, and that is a skill that you need to learn, especially if you're a student, if you're working anywhere, actually whether you're a housewife, student, in the corporate sector, doctor, engineer, you need this skill to rest the mind. You know why? Because every day in the night, you rest the body. But you never rest the mind. आप दिन भर में, रात को जब आप सोते हैं दिन भर काम करके, आप अपने शरीर को रेस्ट देते हैं, लेकिन मन को विश्राम देना है, और वो योग से हो सकता है. So I'm giving you my 3-pronged approach to yoga. Since there are students sitting here, just focus on 3 things in your lifestyle. Number 1, whether you have time or not, even if you can, just for 5-10 minutes, exercise and do some yogasanas every day. The best yogasana, which will take only few minutes, is something called Surya Namaskar, which all of us know. It takes care of your entire system. 5 to 10 minutes every day. Number 1, exercise, asanas, the physical part of yoga. Number 2, after asanas, make sure you look after your diet. What are you eating? The yogic way of eating. Every day. I know you all like to go out and eat all the goodies in life, you are big foodies, you love the pizzas, you love the burgers, you love the chola bhaturas. Have it, party. Once a week, it's okay. But what are you doing the rest of the 6 days? Can you have good, homemade, high prana food, the yogic food? What is yogic food? Mostly things that you don't like, your kaddu, roti, tori, the high prana vegetables. Are you eating good homemade food every day, at least 5 times, 6 times a week? Yogic food. Number 2. And number 3, I can go on about the yogic diet, it's my favorite topic, but I just have about 2 more minutes. Number 3, my friends, is giving yourself deep rest.
your body needs it. Yes? I also mean giving your mind rest. आप अपने मन को विश्राम देते जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शरीर को तो आप लिटा के थोड़ा बहुत सुला लेते हो, लेकिन मन चलता रहता है। और इसीलिए when you get up in the morning you don't feel fresh. There are a lot of thoughts. The mind is not resting. Yes? So you have to learn the technique of meditation. You have to take out some me time for yourself throughout your day. Take out some me time, early morning, afternoon, evening, whenever you can, and rest. Yes? Learn meditation. So these three things, at least in your student life, in the corporate world, can really, really, really make you a living yogi. If you can just focus on three things. So what are the three things? Number one, some form of physical exercise, asanas, physical part of yoga. Number two, a yogic diet. Staff would like to extend a warm welcome to all of you to the International Yoga Conclave held in our multipurpose. I would like to express my gratitude to all the guests who are present here in real time. We actually talked about yoga. This one yoga was first used with big electricity. If we talk about the origin, I think yoga was used because you can explain this origin can be traced back to 6,000 years. What yoga is all about? क्या है yoga? Everyone talks about yoga. You go to art, everyone talks about yoga. I would say yoga is an ancient discipline that connects physical, mental, spiritual aspects of life. It controls our mind, body. Well, friends, all of us at one point or the another, we go on. Stress will affect our efficiency and performance. Stress also affects the social relationship. And when you are in stress, you cannot put 100% efforts. Whatever efforts you put your whole effort will turn to be totally futile. Now yoga helps us in overcoming stress and anxiety. Also yoga really helps us to connect with the nature and connect with the people also. We
go to park, if you are doing some yoga exercises, you will find that you get people from different religion, different caste, creed. So yoga really helps us to connect with the people also. Well, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, has also highlighted the role of yoga by declaring 21st June as International Yoga Day. And this idea has been endorsed by international community, all international bodies of the world. Swami Vivekananda ji also he tried to popularize the yoga in the West. Swami ji highlighted the role of yoga, and I would like to quote him. He said, "Through practice comes yoga. Through yoga comes knowledge. Through knowledge you get love, and through love you get bliss. Perfect happiness." Now we have got number of students, who have come here personally and who have joined online. I would like to stress on one another important aspect. What is the worth of yoga industry in our India only? It is over 85,000 crore rupees. And when you talk about the global, even on the conservative basis, you multiply with 10. You can calculate the figure. That is a conservative figure. I feel, yoga really helps us a lot. It really helps in your concentration. And students, you have to gear up for future. You're really perfect. You have to go for some meditation and yoga exercises. With this, I am sure that the different speakers will enlighten us with the various aspects of yoga, and definitely, it will help us in getting over the number of things. Thank you very much. Thank you so much, sir, for helping us out to conduct this event also, and thank you for your precious words also. Now I would like to invite Dr. Ishwar Bharadwaj ji, who is just coming. Please welcome him. He is having another event at Guwahati, and he is having his flight. In the meantime, he has given us his precious time. So, yeah, he is in administrative block. Just ask him to come, as he is having his flight also. Till the time sir is coming, our very first guest and very kind guest and noble guest is sitting over here, Yogacharya Shri Vipin Joshi ji, who is coming all the way from Dehradun, and he was the first one to be here. Another thing we can learn from yoga, yogic people: be on time, be loyal, be punctual. So I would like to invite Yogacharya Shri Vipin जोशी जी की स्टेज पर आइए और अपने कुछ कीमती अनुभव हमसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम लोग 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ।
एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी का, जो योग के भीष्म पितामह हैं। सारे विश्वविद्यालयों में अभी जो योग का जो पाठ्यक्रम है उसकी रचना करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो पूरा का पूरा एक जो पाठ्यक्रम है उसको बनाने वाले, और हमारी देवभूमि उत्तराखंड की आन बान और शान और योग जगत के बहुत ही एक सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी हमारे मध्य हैं। सभी लोग करताल ध्वनि से ताली बजा करके आपका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। तो मैं भी, चूंकि यहाँ पे मेरा सौभाग्य है जो है यहाँ पर आपकी उपस्थिति में बोलने का सुअवसर मिला है, तो सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा क्योंकि सर की शायद फ्लाइट भी जो है जाने वाली है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, एक तो बी पॉजिटिव बी क्रिएटिव, हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ चलिए। मैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं श्री हिमांशु पांडे जी और उनकी पूरी टीम को इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया। और जो ई कॉन्क्लेव आपने यहाँ पे आयोजित किया, इसके माध्यम से निश्चित रूप से यहाँ पे बेशक हमें थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब चूंकि जो लाइव इस टाइप के इवेंट होते हैं वो बहुत उनका दूरगामी प्रभाव होता है। तो इस आयोजन के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोगों से भी आह्वान करता हूं, 21 जनवरी जो 21 जून है, ये सिर्फ एक संकल्प लेने का दिन है, लेकिन हमें पूरे साल भर नित्य रोज योग करना है, यही इसका उद्देश्य भी है। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और उनका जो प्रयास है, निश्चित रूप से जो हमारी प्राचीन ऋषि मुनि परंपरा है, चाहे योग हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, या अन्य जितनी भी हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके माध्यम से भारत विश्व गुरु बनेगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद आचार्य जी। ओम का जो एन्चैंटिंग था वो देर तक कर पाना बड़ा मुश्किल है, ये मेडिटेशन से ही आता है, तो एटलीस्ट इतना तो प्रैक्टिस करें जैसा कि आचार्य श्री विपिन जोशी जी ने हमें सिखाया और बताया। एक जो बात में एनर्जी होती है, एक जो व्यक्तित्व का पहचान होता है, वो योगा से ही आता है बेहतरीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुरेश लाल बर्नवाल जी को, डीन योगा एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, देव संस्कृति विश्वविद्यालय देहरादून से आप आए हैं, हरिद्वार, और आपका जो विषय है आज का वो है योगा एवं स्वास्थ्य, जो सबसे बड़ा विषय है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए। उसी विषय पे सर बोलने आ रहे हैं। मैं आपका मंच पे स्वागत करती हूँ। बर्नवाल जी, प्लीज आप मंच पर आए और योगा एवं स्वास्थ्य पे अपना अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद अलंकृता। हम लोग अपनी बात गायत्री महामंत्र से शुरू करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि बहुत देर से कुछ न कुछ कर रहे होंगे, एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलने की कृपा करें। सीधी कमर से बैठ जाएं, आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, उस प्राण तत्व को अपने अंदर धारण करने की चेष्टा करें, जिसकी वजह से हम नियमित अपने अंदर अच्छी प्राण ऊर्जा का संचार पाते हैं। उगते हुए सूर्य, उनका ध्यान और गायत्री महामंत्र का जप
जिसमें कि सद्बुद्धि की प्रार्थना हम सभी के लिए करते हैं। हम ये भाव रखेंगे कि ये प्रार्थना है ये सभी के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर सबके लिए सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। इस भाव से एक बार गायत्री महामंत्र मेरे साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु सत्ता के चरणों में दिव्य प्रणाम करते हुए हमारे बीच जो आयोजक मंडल के सदस्य बैठे हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस अच्छे से कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हम अपने आचार्य और गुरु प्रोफेसर भारद्वाज सर का हम अभिवादन करते हुए कि उन्होंने कहा कि हम वहाँ चल रहे हैं तो आप भी चल के कुछ बच्चों से अपने अनुभव साझा कर लें। वैसे तो हम लोग एक यात्रा में हैं, हम लोग एक इंटरनेशनल फेस्ट योगा फेस्ट में जा रहे हैं गुवाहाटी में। तो चूँकि योग का कार्यक्रम है और पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, एक ऐसी निरंतर साधना करने की पद्धति को योग कहा जाता है जो कि सतत मनुष्य जीवन से जब तक हम जीवन हमारा रहता तब तक चलता रहे, वो कभी टूटने का नाम न ले। तो जैसा कि अभी बताया कि सर ने 90 के दशक में मास्टर डिग्री में योग लाके और एक नई शुरुआत की थी। आप आज जो पूरे विश्वविद्यालय में या योग की शिक्षा कम से कम उच्च शिक्षा तंत्र में देख रहे हैं उसकी देन सर की ही है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम लोगों ने उनसे सीखा है और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें जो कि हम लोगों को सीखना चाहिए वो यही है कि योग सुनने समझने के अलावा करने की चीज़ है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो अमृत महोत्सव में अमृत तत्व से जुड़े उसके लिए हम निरंतर प्राण की साधना करें। प्राण की साधना के लिए नियमित प्राणायाम करना चाहिए। हमें सूर्य नमस्कार के लिए अभी कितने सारे एक्सरसाइज हो चुके, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कराने की एक अभियान पूरे देश में संचालित हुआ। उसमें शायद युवाओं का पता नहीं कितने लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन आप रोज कम से कम 5 बार कर लीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए तो वही ठीक है। तो हम स्वास्थ्य की जहाँ तक चर्चा करें, स्वास्थ्य की जब भी चर्चा होती है तो हम स्वास्थ्य को सदैव अपने शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़ के देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक बड़ा कंसेप्ट है जो WHO ने भी दिया है। उसमें भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के दायरे को रखा है उन्होंने। लेकिन एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होता है जो मनुष्य के होने के नाते, चूंकि मनुष्य की आत्मा सबसे हम कह सकते हैं शक्तिशाली है। अगर हम किसी को कहें कि भगवान है या नहीं है तो इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन भगवान की सत्ता मनुष्य में है ऐसा हम देखने के लिए हम अमृत तत्व की प्राप्ति करने की बात करते हैं। तो जो अमृत तत्व है, अमृत महोत्सव जो मन रहा है उसके संदर्भ में जो योग का जो डिफरेंट कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश में चल रहे हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अभियान शुरू हो रखा है। हर संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि ये सारे कार्यक्रम हर जगह चले और युवाओं को जोड़े, क्योंकि युवा शक्तिशाली रहेगा तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब चीज़ें ठीक रहेगी। तो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ों को संतुलित रखना है। अगर हम योग को देखें तो योग सबसे पहले शरीर से शुरू होता है, क्योंकि हम थोड़े कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ आसन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि शरीर से संबंधित होता है। लेकिन प्राण और शरीर ये दोनों के बीच में जो संतुलित होने वाली बात होती है वो मन होता है। मन ज़्यादा व्यवस्थित होगा, मन के अंदर अच्छे संकल्प पैदा होंगे। अब सुबह हमको उठने का मन कर रहा है लेकिन मन में संकल्प उठते ही नहीं, जोश जज्बा हमारा है ही नहीं, तो फिर हम स्वास्थ्य की बात सोचने की बात होगी, मेरे लिए तो ख्वाब होगा वो। अच्छा स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन सुबह नींद खुल रही लेकिन मन में अच्छे संकल्प नहीं आ रहे, तो मन में ऊर्जा कहाँ से भरेगी? ये आसन प्राणायाम करिए तो रोज आपको लगेगा कि ऊर्जावान आप हो रहे हैं। तो ये जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है इसको बरकरार रखने के लिए जो शरीर के अभ्यास हैं, आसन और शुद्धि क्रियाएं, ये दो चीज़ों के अलावा प्राणायाम की आवश्यकता होती है। उसी तरह हम इंद्रिय अभ्यास की बात करें, सेंसुअलिटी आज बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में आ गई है। हम इंद्रिय जन्य सुख की प्राप्ति के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। खासकर हम कहें तो आहार प्रणाली को देख लीजिए, अच्छे अच्छे टेस्ट लेने के लिए घूमते रहते हैं हम, अच्छे अच्छे दृश्य देखने के लिए घूमते रहते हैं। तो जो सेंसुअलिटी है उसको कैसे हम डाइवर्ट करें, उसके लिए योग प्रत्याहार की साधना बताता है। प्रत्याहार से आपके अंदर क्या होगा,
शरीर के अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं उसके अंदर एक शक्ति जो है वो शक्ति अनावश्यक बर्बाद नहीं होगी और वो आपको सुसंस्कारित और सुसिंचित करेगी, आप शक्तिशाली बनोगे। अब उसी को रोज बर्बाद, अब रोज एक छोटा सा गैजेट और ऐप्स हमारे पास है, उसके आगोश में पता नहीं कितने घंटे बिता देते हैं, हमको होश भी नहीं रहता और जब हमको होश आता तब तक आधी रात गुजर चुकी रहती है। तो ये जो दशा है हमारी, ये दशा कहीं न कहीं हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रही है। अभी आपने घटना सुनी होगी, एक नाबालिग ने अपनी माँ को गोली मार दी क्योंकि उनको एक ऐप के अंदर जो है ना गेम खेलने के लिए मना किया गया था और उसने अपने पिता की पिस्तौल उठाई और माँ को गोली मार दी। आपने सभी ने समाचार सुने या नहीं सुने? तो ये समाज हमारा अच्छा रहेगा क्या? जिस परिवार में जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उसकी जो भावनात्मक संबंध थे उसकी उन्होंने हत्या करी, वो तो करी, लेकिन माँ की साक्षात हत्या कर दी। संबंध टूटते वहां तक तो चल भी जाता कि समाज में चलो विखंडन हो गया, लेकिन माँ ही नहीं रहे, कौन उसका पोषण करेगा? वो जेल में जाके उनके साथ जो होना है आप सभी लोग जानते हैं, क्यों कानून तो उनको छोड़ेगा है नहीं। तो समाज बिखर रहा है। सामाजिक जो हमारी एक संस्कार की परंपरा थी जो हमें माता पिता से मिलते थे वो भी कहीं न कहीं टूट रहे हैं। तो यम नियम जैसी चीज़ों का पालन जो योग सूत्र में हमारे यहाँ सिखाया जाता है, योग की पद्धतियों में अहिंसा है, सत्य है, आस्ते है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो छोटे छोटे महामंत्र हैं, ये महान जो सो चीज़ें दी गई हैं ऋषियों के द्वारा, उसको जीवन में सोचना शुरू करो। कम से कम आप करने लगोगे तो दिव्य आत्मा बन जाओगे, है ना? क्योंकि कहते हैं ऋषि अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्याग। अगर कोई अहिंसा की प्रतिष्ठा कर ले तो उसके पास जाके बैठने से ही समस्त जो हमारे अंदर वैर की भावना खत्म हो जाती है। सोचो कितनी दिव्य बात है ये। तो इस तरह के सभी के अपने अपने प्रभाव हैं। तो समाज में समरसता बने, हम यम नियम का पालन करें, माता पिता का ही नहीं आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, ये समाज का स्वास्थ्य है। फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात योग करता है, जिसमें हम अपने आत्म तत्व को जानते हैं, हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा पर्पस क्या है, क्यों आए हम। कभी अपने लिए प्रश्न नहीं उठता। हमारे लिए ढेर सारे प्रश्न हैं लेकिन अपने लिए प्रश्न नहीं करते। अपने लिए प्रश्न करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, कहते हैं मैं IAS बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर। फिर करोगे क्या भैया? इंजीनियर डॉक्टर बन के वही करोगे जो चल रहा है, देख रहे हो, भ्रष्टाचार का व्यापार, तो क्या फायदा आपको? फिर आध्यात्मिक रूप से तो आपके अंदर कुछ जागृति आई नहीं। तो ये जो महापुरुषों ने रास्ते दिए हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ इनलाइटमेंट, ये सब चीज़ें हमारे जीवन का ध्येय है। हम जीवन को इसलिए धारण करते हैं। ये रोटी पानी करना तो पशुओं का काम भी है, हमारे पशु में डिफरेंस कुछ नहीं है ना? तो ये जो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम समान एतत् पशु भी नराणाम, दोनों पशु और मनुष्यों में सब समान है। धर्मो तेसाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समान। जो धर्म है वो धर्म यही है, दो धर्म है, एक तो कर्तव्य करना सीखें और एक अपने जीवन में प्रकाश का अवतरण करें। वो आत्म तत्व के जागरण से होता है। उस आत्म तत्व के जागरण करने के लिए जो भी आप कर सकते हो करो, है ना? अभी ओंकार की साधना सिखाई हमारे एक योगाचार्य जी ने। वो ओंकार वास्तव में ईश्वर का नाम है ना? तस्य वास्य प्रणव कहा जाता है योग सूत्र में। ईश्वर की अभ्यर्थना उस ओंकार के जब से हो सकता है। वो आपके अंदर उसकी ऊर्जा उतरेगी तो आपके अंदर भी जागरण पैदा होगा। तो ये आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसकी प्राप्ति संभव है। तो ये समग्र स्वास्थ्य का कंसेप्ट लेके जीवन जीना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे इसी के लिए सारे प्रयास करते भी नहीं है आजकल। तो कितनी देर हम तो अपने लिए देते हैं भी सोचने की जरूरत है आज के युवाओं को। तो आवश्यकता इस बात की कि योग का जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है उसको जीवन में थोड़ा थोड़ा स्थान दें। बहुत सारी बातों को सुनने के बजाय अगर हम छोटा सा मंत्र सूत्र भी जीवन में धारण करेंगे तो हम शायद योग की दिशा की ओर बढ़ चलेंगे। इन्हीं सारे छोटे संदेश के साथ हम आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने हमसे थोड़ा सा समय लेके हमारी जो भी बातें आपने सुनी, अगर कुछ अच्छी लगी हो तो जरूर आप धारण करिए और आधे घंटे के लिए अपने लिए योगा पैकेज जरूर बनाइए। इन्हीं बातों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतनी अच्छी बातें आपने शेयर की योगा और स्वास्थ्य पे। सारे के सारे इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज हमारे बीच बैठे हैं, उनसे कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही हो सकता है। इस मंच पर
मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को यहाँ पे बुला सकती हूँ। उनके बारे में पहले कुछ लाइंस बता दूँ। प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंसेस एट गुरुकुला कांगड़ी विश्वविद्यालय, इंडिया। Dr. Bharadwaj has many degrees under his belt with the expertise in yoga, philosophy, Upanishad, and consciousness. He has written many books on human consciousness and approach on a healthy life. Due to his excellence in the field, he has been awarded and recognized by Indian government many times. He has also worked as yoga expert in documentary film on yoga produced by TV Man Union, Tokyo, Japan. This experience is an asset he readily shares with everyone who comes into his association. We will be honored by Dr. Ishwar Bharadwaj's presence with his exemplary grace. इतने बड़े हस्ती हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सर का जो टॉपिक है वो है आधुनिक संदर्भ में योगा की प्रासंगिकता। सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। तिष्ठति सूर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वर्णः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामस्तु तद्वक्तारमस्तु अवतु मामस्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय हिमांशु पांडे जी, बहन रंगप्रीता जी, उनका सारा स्टाफ और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्यारे बच्चों, बहुत ही ये सौभाग्य है कि आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। अभी मेरे आने के समय आदरणीय विपिन जोशी जी आपको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बड़े भले आदमी हैं, वैसे भी योग के अनुरूप उनका व्यक्तित्व है और अच्छी बातें आपको बताई होंगी क्योंकि मैं लेट आया था। उसके बाद में अभी डॉक्टर सुरेश बर्नवाल जी ने योग के बारे में काफ़ी कुछ थोड़े शब्दों में बता दिया। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, बौद्धिक और भावनात्मक दृष्टि से व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में उपयोगिता को देखते हुए मैं थोड़े शब्दों में ही कोशिश करूंगा कि आपको आज जो योग की आवश्यकता है ये कितनी है इसके बारे में थोड़ा संकेत करूं। जब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का प्रणयन किया था उस समय समाज में ये सब स्थितियां नहीं थी जो आज है, लेकिन जो आज की स्थिति में योग का प्रयोग हो रहा है वो अधिकांश रूप से हम स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए अथवा रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए योग का प्रयोग कर रहे हैं और इसी रूप में योग को जाना जा रहा है, इसी रूप में योग का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सत्प्रयासों से Start your session in 1 to 2 minutes. That's it. क्या हो गया?
तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदस्य Unable to hear anything, my dear. मेरे बोलते क्या हो रहा है? अच्छा, शर्मा जी थोड़ी देर बाद बोलेंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज योग को विश्व में वो सम्मान मिला है जो इससे पहले विश्व स्तर पर केवल हमारे संतों महात्माओं योगाचार्यों द्वारा दिया गया, लेकिन उस स्तर तक वो नहीं पहुंचा था। आज व्यक्ति व्यक्ति तक योग पहुंच गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए योग का और आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, वहाँ कहा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से। जो योग का प्रयोग हम करें वो स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए कर लें, और अगर किसी कारण से रोगी हो जाए तो रोग के निवारण के लिए कर लें। ये दोनों ही एस्पेक्ट आयुर्वेद के भी हैं, योग के भी हैं। आयुर्वेद में भी स्वास्थ्य के संरक्षण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। हम उस दिनचर्या का पालन करें जो आयुर्वेद में चरक संहिता में बताई गई है, तो रोगी होंगे नहीं। इसी प्रकार से हम योग का उपयोग करेंगे, रोगी होंगे नहीं, और किसी कारण से यदि हो जाएंगे तो उपयोग करके हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि हम स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए योग का प्रयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से हम उपयोग करें, अच्छी बात है। लेकिन इसके मूल में निहित जो तथ्य है वो केवल स्वास्थ्य उसका एक दशम अंश है। जो 90% है वो मनुष्य को उत्कर्ष की ओर ले जाना है, मनुष्य को मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ाना है। हम जिस स्थिति में हैं वहां से हम उपयोग करें, हम अच्छी बात है। हम जिस स्थिति में हैं आज मनुष्य, वो अगर हम अपने मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उससे नीचे पशुत्व की ओर चले जाएंगे, और उसी मनुष्य धर्म का पालन करते हुए हम देवत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये योग हमें देवत्व की ओर ले जाने वाली एक विधा है। हम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, सब सांसारिक दायित्वों का पालन करते हुए, और इसी समाज में रहते हुए अपने आप को किस तरह से इससे और उबार करके ऊपर की ओर उठाएं, मनुष्य से देवत्व की ओर जाए, ये योग का संदेश है। तो मैंने जो जैसा कहा ना कि हम जिस पक्ष को ले रहे हैं वो अभी 10% है, उससे जो 90% है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, तो उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता उसकी इसलिए भी ज़्यादा है कि वेद में कहा है मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। जो बच्चा है उसका सबसे पहला गुरु माता है, माता के अंक में आता है सबसे पहले। थोड़ा सा बड़ा होता है तो पिता के सानिध्य प्राप्त करता है, और जब स्कूल जाने लायक हो जाता है तो आचार्य के पास आता है। आज कामकाजी होने के कारण माता की भी स्थिति बच्चे को ज्यादा समय देने की नहीं रही, पिता की स्थिति भी नहीं है। फिर एकल परिवार हो गए हैं जहाँ माता पिता और बच्चा बस एक या दो बच्चा है, दो भी नहीं, अब एक ही है, और वहाँ आके बच्चा अकेला पड़ जाता है, फिर आया के पास छोड़ के जाता है, या डे बोर्डिंग में बच्चे को छोड़ते हैं, फिर काम करने के लिए चले जाते हैं। तो माता पिता नहीं समझ दे रहे। उसके बाद में आचार्य का दायित्व आता है, तो आचार्य के पास जब भेजते हैं तो आचार्य भी आज वेतनभोगी है। आचार्य अपना आचार्यत्व का जो धर्म है
उसकी अपेक्षा जो रोजगार का धर्म है वो निर्वाह कर रहे हैं। दूसरे करे भी क्यों नहीं? आज का समाज ऐसा हो गया, अगर बच्चे को डांट दिया तो शिकायत, माँ बाप भी लेके चले आते हैं कि हमने तो डांटा नहीं बच्चे को। और नहीं डांटने का ये फल है कि अभी जो सुरेश जी ने बताया, माँ को गोली मार दी, किसी को भी मार सकता है। अमेरिका में हथियार के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी ले जा सकता है। तो आए दिन घटनाएं होती है, स्कूल में बच्चा ले गया और जाकर 10-20 को मार दिया, क्योंकि वो संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए वो आगे हम समाज में बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो माता पिता जब बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, आचार्य भी नहीं देंगे, तो कौन देगा? वो ऐसा ही विशृंखल समाज बनेगा। तो हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आज आवश्यकता योग की इसलिए है कि योग में जो नैतिक मूल्य है, जो मानव धर्म है, जो समाज के लिए उपयोगी है, वो सब चीजें हम बच्चों को सिखाएं और उस समाज का निर्माण करने का प्रयास करें जो पहले हमारा था, जिसको हम स्वर्ण काल कहते हैं भारत का, और जो ऋषि मुनियों की परंपरा का निर्वाह करते हुए जीवित रहते थे। आज भौतिकता की दौड़ में हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को खोते हुए हम बहुत पिछड़ गए हैं। जिस मूल्यों के कारण से पाश्चात्य जगत भारत में आता था, वो हमने यही खो दिए हैं और हम उनके अनुकरण करने लगे हैं। वो तो हमारी तरफ को आ रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ को जा रहे हैं अपने आप को छोड़कर। अपने जो मूल्य है, अगर वो हमने छोड़ दिए तो हम अच्छा डॉक्टर तो बना सकते हैं उसको, लेकिन उसको किडनी बेचने से नहीं रोक सकते। हम अच्छा मनुष्य उसको नहीं बना सकते। अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, लेकिन पुल ना गिरे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जो कमीशन खाने का हमने जिम्मेदारी अपनी बना ली है वो बिना योग के नहीं आएगी। तो जीवन यापन करने का साधन तो बनाना अच्छा है, लेकिन उसको जीवन के लिए उपयोगी और समाज के लिए उपयोगी बनाते हुए हम चलेंगे, तब अच्छे समाज का निर्माण होगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप आज जहाँ रह रहे हैं वहीं एडजस्ट नहीं कर पाते। हमें इतनी कुशलता नहीं है कि हम जिस समाज में, जहाँ परिवेश में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कार्य क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ जिसके साथ रह रहे हैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। वो एडजस्टमेंट भी योग से आता है। चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन समय भी मुझे 10 मिनट ही कहा था, 10 मिनट भी हो गए होंगे, लेकिन मुझे जाना भी है, इसलिए बहुत सारी चीजें बताने का सोचते हुए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अभी एक ही उद्देश्य में कहूँगा, योग का शरीर स्वस्थ भी रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और मन को स्वस्थ करने के लिए क्या मन है? सत्येन शुद्धति। मन को शुद्ध करना है तो सत्य कहाँ चलती है। मन को सत्य के द्वारा, और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक सत्य और ज्ञान, ये भी सुना आपने, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। अनंतता तो हम नहीं आ सकती क्योंकि परमात्मा में, लेकिन सत्य और ज्ञान का आचरण करते हम उस परमपिता परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। और ये जो सारी चीजें ना दिखावे वाली, ये सब छोड़ दीजिए। अपने आप अपना व्यक्तित्व निखर आएगा, वो खुद देखेगा, कपड़ों से नहीं देखता। वो अच्छी लच्छेदार बातें बनाए और आचरण हमारा अच्छा ना हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। अपने जीवन को आप उन्नत बनाएं, इस समाज में रहते हुए भी समायोजित रहें, अपने परिवार में, घर में सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि हमारा जो संदेश है ना वेद का, वो कहा महाश्रेयम सौम्य है, सौम्य किसी को कष्ट मत दो। वही अहिंसा की बात हम करते हैं।
ऐसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की बात हमें सुनिश्चित की। शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शुचिता केवल शरीर की नहीं कि पियर से धो के साफ कर लिया शरीर को, कपड़े बढ़िया वो सर्फ से धो लिए, लेकिन मन को धोया नहीं तो वो सफाई का फायदा नहीं है। तो मन को धोने के लिए क्या करेंगे? सत्य का आचरण। अद्विर का प्राणी सुतंती मन सत्य में शुद्ध। केवल जल से शरीर को साफ करना, कपड़ों को साफ करना वो पर्याप्त नहीं है। मन को साफ करने की जरूरत है और बुद्धि को ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो हम उन्नति के उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जो परमात्मा के सानिध्य में हमें ले जाने में समर्थ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिमांशु जी का, अलंकृता जी का धन्यवाद भी, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आप सब देव शक्ति हैं, आप सबके दर्शन करके मुझे बड़ा आह्लाद हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। हम भी इस बात से सहमत करते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से योगा और भारतवर्ष वापस से हमारी संस्कृति वापस से वैसा ही बनने लगा। तो मोदी जी का योगदान, आप सबका योगदान, आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें कि मन को भी शुद्ध करो, सिर्फ कपड़े या क्रीम या परफ्यूम लगाने से नहीं होगा, मन भी शुद्ध रहेगा तो योगा का ज़्यादा असर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम काफ़ी देर से डॉक्टर बी.आर. शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं ऑनलाइन मोड पे वर्चुअली, तो अब उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। बी.आर. शर्मा जी पीएचडी भक्ति अंडर धर्मशास्त्र in 1984 from राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, manuscriptology course in 83 through UGC at University of Jammu and Kashmir. He is Shastri BA honors in 1978 from Rashtriya Sanskriti Sansthan New Delhi, and he is currently Vice Chancellor of Shri Shri University Cuttack Shri Shri University. He awarded Lifetime Achievement Award by the President of Indian Association of Yoga, New Delhi, for his contributions in the field of yoga during 6th International Conference on Psycho-Spiritual Approach to Yoga held on 23rd Feb 2020 at Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar. And his topic for today is Yoga for Holistic Life. So I would like to welcome Dr. B.R. Sharma ji to please address the audience on the topic. So I would like to welcome Dr. B.R. Sharma ji for presenting his view on the topic Yoga for Holistic Health from Shri Shri University. And he has been waiting from the morning. Due to some technical faults, we were not able to connect. So I am really whatever thankful happened and in the morning, I could not listen. I joined this meeting, but I could not hear anything right from the So I would morning. like to welcome So Dr. now B.R. I heard that it Sharma is ji my turn. I do not know for whether you presenting people are his able to view hear me or on not. the topic Yoga Okay, thank for you Holistic very much. Thank Health you very much. from Shri Shri So, University. all the dignitaries and the organizers of this conclave, And
he is been Uh, waiting from the I am morning. very thankful Due for to some technical faults, all of we you were for not able to connect. So I'm giving me really this opportunity thankful to share and my with thoughts with you all. And the topic given to me is the yoga for holistic health. Right from the So I would morning. like to welcome So friends, I heard that it is right from the morning you are listening presenting so many things. I do not know on the what you topic have heard. yoga Thank you for very much. But I would holistic say health that if we, from in Sri spite Sri of this University. everything is going on, and if we pay little attention of this conclave towards the And he is being health waiting from the state of mankind today, technical I faults. think that we We were all not able will to be connect. agreed So I'm really that thankful somewhere or other we all are losing our access of balance and harmony at all level. And the whatever the means we are adopting, they are at the superficial level. We are not reaching to the roots of the problem. So at this juncture, it is this in this scenario we have to go to the roots, and therefore there is a need to understand the holistic aspect of our health. Today we are treating the disease, not the patients, and therefore there is a problem. And yoga is at all level the having that potential to reach to the cause of the problem. So therefore I suggest that let us understand first of all the concept of holistic health. And we have to somewhere or other, we all agreed that the conventional methods are falling short. And therefore, we have to have this kind of holistic approach to health, and therefore there is a problem. And overcome this what you call the problems. Having that potential to reach to the cause as our Sankhya philosophy says. So therefore, I suggest that let us understand first of all the concept of holistic health. So if we want and overcome, we have to somewhere or other. We all agreed that ultimately we have to overcome the threefold sufferings are only by actualizing who we have to so have this kind of disease, not the purpose to health, and therefore there is acceptable to and the overcome whether they are this what you call the problems. Ultimately, even in other religions, as our those who have actualized therefore, I suggest that they have to understand first of all, coming to the concept of holistic health. If we want and over, we have to somewhere philosophical. We all agreed that ultimately we have to overcome the threefold sufferings which are only which are actualizing who we have day-to-day life. So have this kind of disease, not the road to health, and therefore there is acceptable and the overcome whether there is an imbalance what you call the problem. Whether it is a ultimately even in imbalance as those who have actualized therefore I suggest that they have to understand first of all bring in concept of holistic. If we want and over we have to this is philosophical. We all agreed that ultimately we have to overcome the threefold sufferings which are only which are actualizing we have not imbalance. So have this kind of disease, not the way to health, and therefore there is some body is and the overcome whether there is a imbalance whether it is a ultimately even in imbalance as those who have actualized therefore I suggest that they have to understand first of all bring in concept of if we want and over we have to this is a philosophical we all not that ultimately we have to overcome the but this mind part plays a very important role. It can participate with the body as well as to the mind, as well as this mind part can play participate with the spirit aspect also. So therefore, there is a need to understand that this mind plays a very, very important role for keeping us healthy or unhealthy. So we have to take as it is beautiful said that maneva manusyanam karanam bandha moksho. Mind can bind us and mind can liberate us. So therefore, the whole Yoga Sutra is talking about, and yes, I
I may say that it is not the time to talk about the yoga Chitta Vritti Nirodha, because this Chitta Vritti Nirodha is also misunderstood. And there's a need to understand these concepts properly. And then only this holistic approach will be understandable to all of us. And this is to be. So what is this? Let me say. So there is a default setting. Whatever we are doing, how we are perceiving this universe, this is a very, very important. So it is only because of the previous memories, it is a default setting, and we get carried away along with the thoughts, and we are lost. And therefore there is a problem. So with a view to understand this, we have to rechannelize this flow toward the other side. And that other side is, today we are moving toward the piecemeal approach. And what is to be done? We have to divert ourselves. We have to change our mindset toward the holistic side. So imbalance in the psychophysiological functions at the bodily level, that is the cause of our all problems. That is what. So how to balance it? Each and every practice of yoga, and this practice is not only on the mat. It is a 24 hours practice. Let me give you one idea, that we are considering this Ashtanga yoga as the steps. These are not the steps. If you compare it with if you consider it as a yogic tree, then yamas and niyamas are the roots of this tree. And if you want to grow this tree within ourselves, then we have to water these roots first, and thereafter comes the what you call the stem part of this tree. That can be equated with the asana and pranayama, but the different branches, because there are different inputs we are taking from the sensory organs, and that can be a pratyahara. And on the leaf, the leaves of this tree can be equated with the what you call the dharana. And then on these leaves, there comes the flower, we used to call it dhyan. And on this flower, there comes the fruit, we used to call it samadhi. And this samadhi is not that samadhi wherein we have to sit in one corner of the room by closing our eyes. No, this is not the concept of samadhi. It is a total integration of our personality. Whatever we think, that only we speak, and whatever we speak, that we take to the action level. And if this integration is cultivated some way or other, this is what is called holistic, nothing else. Otherwise, we will be in the piecemeal. So the purpose is to divert our energy toward this holistic side. Whatever we think, that only we should speak, and whatever we speak, that we should take to the action level. This integration is called yoga, and this integration is called holistic approach. With these words, thank you very much. Only a few minutes are given to me. Thank you very much for giving me this opportunity to speak with you all. Thank you very much. Namaste, and thank you very much once again for making me a part of this conclave. Thank you very much. Namaste. Namaste. I think I might be next. My time was 5:05, so I've decided to talk on ahimsa because it's such a fascinating topic. And it's the central tenet, as you all know, of the yamas and niyamas that threads it together, and it begs us to question what is morally right. I found the concept of ahimsa, to do no harm, is immeasurably profound. My own understanding began somewhat superficially, and that was without great reflection, innocently revering aspects of non-violence, at least partial vegetarianism,
and other such means of respecting and preserving planetary life. As a further observation, I've greatly admired heroes such as Mahatma Gandhi, whose revolution of non-violence epitomized for me the notion of ahimsa, an immensely powerful mechanism for resisting British colonial rule. Religious texts since time immemorial have advocated kindness towards others, treating others as we would want to be treated ourselves. I've greatly admired heroes, and yet thousands of years such as Mahatma Gandhi. यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. So, as per the teaching of, if I ask someone or any one of you, what are you looking for in your life? What do you want? So mostly the people, they say either they want a good health, is it or not? Everyone wants a good health. And peace of mind, is it or not? And when they say peace of mind leads to what? Peace of mind leads to happiness. So that is why our Guru Swami Vishnudevanand said very clearly after experiencing that health is wealth, peace of mind is happiness, yoga shows the way. So how the yoga shows the way in achieving the good health and the peace of mind or happiness? There are certain natural principles. If we follow those natural principles in our day-to-day life, we are happy and healthy. And those natural principles, which has been experienced by our gurus, Swami Shivananda and Swami Vishnudevanand, and those principles are, if you do proper exercise every day, that is important. Proper exercise means proper asanas. If you do proper breathing, that is pranayam, every day. If you do proper relaxation every day, if we take a proper diet every day, and if we have got a positive thinking and meditative mind, we are happy and healthy. There is nothing beyond these 5 principles or points which can make us happy and healthy. So let's discuss very briefly, don't have much of time, that what is proper asanas. Asanas means what? Patanjali Sutra says, Sthiram Sukham Asanam. Steady, comfortable posture. Any posture you do, you have to be comfortable and have to hold it for some time. But initially it is very difficult to hold the posture. So what is there? The basic principle or the main benefit of doing asana is to give flexibility, strength and health to the spine. More flexible our spine is, more young we are, more active we are. I'll give you an example of the children. A normal child, how active they are. They are never tired. Rather, we have to tell them, okay, now you stop, relax. So once they grow, their spine becomes stiffer and stiffer. So one becomes more stiffer and stiffer in body as well as in the mind.
yoga, a yogi consider this body as, this human body as a vehicle to the perfection, which is carrying the soul or the self or the Atman to the perfection. So this body has to be kept perfect, right, to its journey. So, modern physical exercises, they mainly focus on building up of the body muscles, which involves the violent movement of the different parts of the body. And when we do the violent movements of the different part of the body, this creates the lot of lactic acid into the body, which leads to fatigue and tiredness. So yogic asanas, of course, they also look after the building of the body muscles, but they usually work more. Besides working on the body muscles, they work more on the internal organs of the body, internal digestive system, endocrine system, circulatory system, all this system, the yogic asanas, it helps. So that is the proper exercise or asanas one must do every day. So it is not only when you are practicing asanas, it is not only doing at the physical level, but at the mental level as well as at the spiritual level also. Then is pranayam. What is pranayam? Prana means the vital force, right? The pranayam means the knowledge and control of the prana, right? So once we practice pranayam, and one of the most common, pranayam exercise is Anulom Vilom. You might have all have heard, alternate nostril breathing or Nadi Shodhan pranayam. So the pranayam is a conscious breathing when we are aware of what we are doing. Then is the proper relaxation. So what do we understand by proper relaxation? What is the yogic relaxation? Yogic relaxation is of three types. One is relaxation at the physical level, another relaxation at the mental level, and the third is the relaxation at the spiritual level. So all these three have to be practiced simultaneously, not any one of them. So to understand the relaxation at physical level, just to understand, since I don't have much of time, I'll just say the opposite of relaxation at the physical level is what? Contraction of the body muscles. So from where the body muscles come, this contraction comes. Is it not that it comes from the thought? For example, if the deadline is approaching, your whole body becomes tense, right? And you are anxious, you are tense, right? So this thought of finishing the time or finishing the job at time makes you tense. So from where the relaxation should come? This relaxation should come from the thought only. And that thought can be done, that relaxation at physical level can be done by auto-suggestion. So when we lie down in a shavasana on the back, right? And when we repeat mentally ourselves that I am relaxing my toes and feet, my toes and feet are relaxing, my toes and feet are relaxed. We are not moving them physically, right? But we are sending the message to that part of the body to relax. So this way, we relax the whole body right from the toe to the head and as well as the internal organs. Then is the mental relaxation. The mental relaxation is directly, our mind. There is a vital connection between the mind and the breathing. When the mind is agitated, the breathing becomes fast. When the mind is calm, the breathing becomes calm. We do not have a direct control over the mind, but we can have a direct control over the breath. Right? So once we consciously watch the breath and once we are aware of the breathing, it slows down. And once the breathing slows down to the imperceptible level, when we feel the inhalation and exhalation,
just at the opening of the nostril or within the nostril, the mind becomes calm. So that is the mental relaxation. Then what is the spiritual relaxation? Spiritual relaxation, the cause of sorrow and pain. What is the cause of sorrow and pain? The cause of sorrow and pain is the attachment. Attachment, So once we are detached from the thoughts, or when we are detached from the mind and the body, we are relaxed. I'll give you an example. How many of you get sound sleep? How many of you get deep sleep? And when you get up after a sound sleep in the morning, how do you feel? How do you feel? What comes the first sentence from your mouth? Oh, I had a sound sleep, I am fresh. I am fresh. Is it or not? I am fresh. Dreaming is not a sound sleep. Without dream, right? So I am fresh. Why I am fresh? And then can anyone say that how long one has a deep sleep? No. No one can say. Because in deep sleep, the mind is not working. And the time is in the mind. And when the mind is not working, so there is no time. But only expression, this shows very clearly that the thoughts, vichar, जो मन में हैं, वो they consume prana. And when the mind is not working, the prana is restored. And when we get up early in the morning, after a sound sleep, we say, I am fresh. I am fresh. Means you are detached from the mind and the body. So now in final relaxation, when we do the spiritual relaxation, it's a long process. We have to tell ourselves, after relaxing, by auto-suggestion at physical level, by controlling the breath at the mental level, and then we say, we tell ourselves, we repeat ourselves mentally that I am not this body, I am not this mind. I repeat, I am not this body, I am not this mind, but the still mind is working. So the mind will ask, that who the hell are you lying on the floor? Is it or not? So then you have to say, you have to repeat, I am the all-pervading, the all-powerful, the all-joyful, the all-blissful. I am the pure consciousness, I am the Atman, I am the Self, I am the Brahman, I am Sat Chit Anand. Relax. Even if you can detach yourself for a fraction of a second, you feel rejuvenated. That is a yogic relaxation. On the physical level, mental level, as well as spiritual level. And then the fourth point is proper diet. So what is proper diet? When you start doing asanas and all that, the thought comes to the mind. What should I eat? What should I not eat? So our Guru Swami Vishnudevananda has said in one sentence, what is a yogic diet? A yogic diet is a natural diet which is easily digested and completely assimilated into the body and provide the right quality and quantity of proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, fatty acids, fiber, etc. And then he used to ask, after telling this is the definition of a yogic diet, he used to ask the students, what is that diet? So then they say, the vegetarian diet. Okay, fine. But why vegetarian diet is a natural diet? Because the natural source of energy is sun. Who gets the energy from sun? Directly, the plants. Animals, they get either from the plants or from the other animals. So if we eat plant, we get first-hand energy. First-hand energy. If we eat animals, and we get either second-hand or the third-hand energy. So Swamiji used to say, now, choice is yours. You're a human being, we want everything fresh. Is it or not? We don't want to use anything which is used. Right? So that is proper diet.
And the fifth point, the most important, that's why Swamiji has kept this point at the last. Positive thinking and meditation in the last. Dhyana and Vedanta. Why? Because you have to, for meditation or for to know your true self, you have to prepare your body. You have to control. You know, in one way you can say, what is yoga? Yoga basically is a discipline. Yoga basically is a discipline. Asanas, they discipline the body. Pranayam, it disciplines the breath. Meditation, it disciplines the mind. So first we have to discipline the body and the breath, and then we can manage the meditation. So meditation, by and large, it is a concentration. Meditation is a concentration. When you can keep the same one thought, as said by Swami Shivanand, if you can keep the same one thought for 12 seconds, it's a concentration. Try. Not that easy. So, but with practice we have to do it. Mind lake, in the mind lake, there are, when there is a ripples on the surface of the lake, we cannot see what is at the bottom of the lake. In the same way, in the mind lake, the ripples are in the form of thoughts. So once we reduce these thoughts by concentration, only then we can do. So these are the 5 principles. Because it's such So a fascinating practice. it's central. As our Guru says, Swami Shivanand says very clearly, an ounce of practice, an ounce of practice is better than a ton of theory. An ounce of practice is better than ton of theory. So practice, start practicing asanas, pranayam, you can see a proper relaxation, shavasana, then proper diet, sattvic diet, right? And then positive thinking and meditation. So I tried my best to put before you these 5 points of yoga. Health is wealth, peace of mind is happiness, yoga shows the way. So thank you very much to the organizers, thank you very much for the audience. So thank you very much. Thank you so much, sir, for giving your precious time and sharing your... Sir, with this thank you note, the event does not end. You have to come back again on the stage to get a token of memento from our end. I would like to invite Dr. K.L. Dhingra, sir, on behalf of college, to please present the... It's plant as a token or memento for making India a greener India. Thank you so much, sir, for coming in the event. Honored to have you here, sir. Thank you so much. And after listening to you, a lot of questions are coming in my mind. And we have to get answers in your Shivananda ashram. Definitely I would come, and maybe all the audience would like to come there and get that spiritual answers. The next speaker is Miss Antonietta Rossi. Antonietta Rossi will be with us virtually. She is from Italy, Japan, Yoga Niketan, recipient of 2019 Prime Minister's Award, Professor of Pedagogy and Yoga at University of Bologna and Bolzano, President of
Asu Yoga Italia, President of Sarva Yoga International, Honorary President of Italian Yoga Federation. She studied literature and philosophy in France and is teacher of modern languages and literature in Italy. She started practicing yoga 45 years ago. In 1976, she obtained Diploma of Yoga Teacher at the Integral Yoga Institute of Andrew Van Elizabeth and Satyanand Ashram of Mongir. She attended many courses at Vedanta Forest Academy in Rishikesh, at Kaivalya Dham Institute of Lonavala and Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy in India and USA. And her topic for today's event is why to adopt yogic lifestyle. Why to adopt yogic lifestyle or yoga and wellness. So I would like to invite Miss Antonietta Rosie. And her topic for today is and Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy in India and USA. And her topic for today's event is why to adopt yogic lifestyle. Why to adopt yogic lifestyle or yoga Inviting and me, wellness. it makes me So I would very like happy to because I invite feel to Ms. be Antonietta once Rosie. again back home to India, which is my second home. Pranams and respect to all the distinguished guests. I will speak today on breathing and pranayama in youth. Indeed, we will speak only of breathing, due also to the short of time. As many distinguished guests has underlined, yoga is an empirical science which highlighted the fundamental link between psychic state of mind and breath. And with the help of breathing techniques, it has implemented methodologies for mental control. It makes me very happy because I feel to be once again back home to India, which is my second home. Pranayama and the effect of simple breathing with emphasis on a very I will speak today on breathing powerful phase and pranayama which is not always suitable for children and only of so in this short talk we will not discuss on as many distinguished guests underline yoga that only an empirical science and breathing which highlighted the fundamental link between psychic state of mind and thought and with the help of breathing techniques it has implemented methodologies for mental control. It makes me very happy because I feel to be once again back home to India, which is my second home. Pranayama and the effect of simple breathing with emphasis on a very I will speak today on breathing powerful phase and pranayama which is not always suitable for children and only of so in this short talk we will not discuss on as many distinguished guests underline yoga that only an empirical science and breathing which highlighted the fundamental link between psychic state of mind and thought and with the help of breathing techniques it has implemented methodologies for mental control. It makes me very happy because I feel to be once again back home to India, which is my second home. Pranayama and the effect of simple breathing with emphasis on a very I will speak today on breathing powerful phase and pranayama which is not always suitable for children. I will try to go on. So in this short talk we will not discuss as many distinguished guests underline yoga that only an
behavioral science on breathing, which highlighted the fundamental link between psychic state of mind and different thought and ideas of breathing for at least two main recommended methodologies for mental need. It makes me very feel to be once again back home to India, which is nothing special. And the aspect of emphasis on a very dedicated and on breathing powerful phase and pranayama, which is not always suitable for children and will try to go out. So short line, we will not be particular as many people get the underlying only and behaviors and breathing, which highlight the fundamental link between psychic state of mind and different thoughts and ideas of reason for two main recommended methodologies for mental need. And very feel to be once again back home to India, which is nothing special. And emphasis on a very dedicated on breathing powerful phase and pranayama, which is not always suitable for children and will try to go first. So short line, we will not be particular as many people get the underlying and breathing, which highlight the fundamental link between psychic state of mind and different thoughts and ideas of reason for two main recommended methodologies for mental need. And very feel to be once again back home to India, which is nothing special. Emphasis on a very dedicated on breathing powerful phase and pranayama, which is not always suitable for children and will try to go first. So short as many people get the underlying and breathing, which highlight the fundamental link between psychic state of mind and different thoughts and ideas of reason for two main recommended methodologies for mental need. And very feel to be once again back home to India, which is nothing which is not always suitable for children and will try to go first. My mobile is switched off. It's not my mobile. Sorry, can you tell me what I have to do, because I'm a little bit confused. I have no mobile switch on, so it's not mine. Can you answer me if you can hear? I can go on. Yes, please go on. Thank you. Thank you. So I was saying that yoga does not only teach by words, but it makes one experiment in the special workshop. When we practice yoga, each practice becomes like a special laboratory where the experiment, the scientists who do the experiment, and the result of the experiment are concentrated in the same person, which becomes the real special workshop. So, experiencing through simple breathing technique the ability to modulate, to change one state of mind, to manage one reaction to events and the different situations that can arise, gives a deep sense of security and serenity. The security of being able to cope and to make it on our own, which contrasts, especially today, and I would say in our Western society at least, with the sense of bewilderment, helplessness,
loneliness, and especially lack of goals and vision of the future that features nowadays the majority of young people and the new generation. This, according to many experts in psychology, sociology, and education. We know that every historical era has its own challenges. A constant challenge over time should be to leave future generation a better world, starting, as yoga teaches, a higher consciousness level, which to the challenge, on the other hand, leave the young a sense of insecurity, almost of nihilism, in a world mainly centered on exteriority, on materiality, that takes hope and dynamism away from young people in their planning for future. And we can say that the visions, the utopia of the future, are the very natural essence of the age of youth. And more of that, the evolution of humanity is due, generation after generation, in new discovery and progress and utopia in the outer world as well as the inner world. This is why it is important to give young people self-confidence, but also, I would say, a broad vision, glimpse toward the greatness. All mystics of all traditions and times have emphasized the mission of the human being, which is turning his gaze toward the infinite, to overcome this sense of separation and finiteness. Yoga, especially with breathing techniques which involve physical and mental balance, can help to develop an harmonious and wide vision of life, focusing on the real and positive goals of life as well. Our breath, with its physical, psychic, and even spiritual resonance, is the function that can easily be contacted, that can modulate, which represent a pathway toward the union of the infinite life, essence, and the existence of the infinite cosmic reality. Breath is that essence of life that materializes in every being, or Atman, as a symbol and as an expression of the universal reality of Brahman. In yoga, all these planes can be explored, can be revealed by breathing, and the precious technique that Rishi has passed on to us. It is always amazing for me to discover how the science of yoga can reveal the highest mysteries of our existence by using a tool that may seem simple, but which simply emphasize the greatness of life and its creator, and the sense of universal unity. When we breathe, we are united through the atmosphere with all the being breathing the same air and prana which sustain life. We are united with the principle of life itself. We participate with our breathing to all past lives and future ones. And at the same time, we are projected beyond life, beyond time, and beyond space. Even if we are not aware or fully conscious of all these symbols present in breathing, somewhere, some part of us remember this reality at every breathing. And every breathing reinforces these remembrances. So I can only express gratitude to all gurus and yoga masters for their precious and universal imprintings, which can help all, and especially youth, to achieve their personal, social, and spiritual mission in life. Thank you very much. Beyond time and beyond space. Even if we are not aware or fully conscious of all these symbols present in breathing,
somewhere, some part of us remember this reality at every breathing. And every breathing reinforces these remembrances. So I can only express gratitude to all gurus and yoga masters for their precious. Kareem Selshire from Australia, yoga expert and meditation teacher, learned yoga from Krishnamacharya tradition, member and president of Australian Association of Yoga Therapists, and the topic for today's event is integration of pranayam in my medical practices. So I would like to invite Ms. Kareem Selshire to please come up on the stage virtually. Kareem Selshire from Australia, yoga expert and meditation teacher. Hi. My name's Karen Shelshire, and I'm in Sydney, Australia. And I'd first of all like to acknowledge my teachers. The topic for today's event is integration of pranayam in my medical practices. So I would like to invite Ms. Kareem Selshire to please come up on the stage both have been the virtually. most amazing teachers. And I must acknowledge Raghuram as well, who has provided wonderful philosophy. I've chosen today to speak about ahimsa as a central tenet of the yamas and niyamas. And I approached the notion of ahimsa maybe many years ago, a little bit superficially perhaps, looking at vegetarianism and looking at ways of stepping lightly on the planet. And I think in the richer frameworks of yoga, I have come to understand what an extraordinarily profound concept ahimsa is, that affects our every moment and every aspect of our thinking and reflecting lives. When one thinks of ahimsa, one automatically thinks of Gandhi and the movement of the revolution, in fact, of non-violence that epitomized the most powerful mechanism for resisting British colonialism in the 1940s, and recognizing that non-violence is actually an extraordinarily powerful tool. I think since time immemorial, the texts have given us indications as to being kind to others, treating others the way we would want to be treated ourselves, etc. And yet, in modern times, we can see that this worldly epitomized the most powerful mechanism for resisting British colonialism in the 1940s, and recognizing that non-violence is actually an extraordinarily powerful tool. I think since time immemorial, the texts have given us indications as to being kind to others, treating others the way we would want to be treated ourselves, etc. And yet, in modern times, we can see that this worldly
epitomise the most powerful mechanism for resisting British colonialism from the 1940s, and recognising that non-violence is actually an extraordinarily powerful tool. I think since time immemorial, the texts have given us indications as to being kind to others, treating others the way we would want to be treated ourselves, etc. And yet, in modern times, we can see that this worldly epitomised the most powerful mechanism for resisting British colonialism from the 1940s, and recognising that non-violence is actually an extraordinarily powerful tool. I think since time immemorial, the texts have given us indications as to being kind to others, treating others the way we would want to be treated ourselves, etc. And yet, in modern times, we can see that this world of the direction that we're aiming for. Yoga teaches us to foster and cultivate that gap of perception, even in the pause between the inward and outward breath. There is a calm of the moment, in the moment, that we can change. We can deliberate from unhealthy thoughts to healthy thoughts, from aggressive to calm resistance or pacification. I ask myself, how often do we commit himsa without intending, without realizing, without being aware? And how often do we get hurt and offended by what someone has said? That gap gives us a space, a pause in the moment for clarity. And a great psychiatrist who was in the prisons of Auschwitz, the concentration camps, he was a believer in cause and effect. He said, well, we're a bit automatic. There's a cause and then there's an effect. And then after being in the concentration camp, he discovered something completely different. And that was between the cause and effect is the gap, is the moment of consciousness, the moment where we can capture how we're going to react to the moment, how we're going to allow it to affect us. Ahimsa has great ambivalence as well, such as telling the truth, or that may be more hurtful, or concealing it. Whether it's more important to protect our family or to do what's best for the greater good. As part of the Mahabharata, the Bhagavad Gita expresses the dilemma of Arjuna on the battlefield with Lord Krishna, procrastinating over the difficulty of killing his relatives or defending direct family and their rightful entitlement to the lands that they've been denied, and hence their ongoing survival. Ahimsa is not straightforward. Harm will ensue either way. The message, however, is to look inward for discerning the right path. This requires an inner journey of consideration. The call of ahimsa demands the single-mindedness to be fearless without faltering where the journey takes us. Ahimsa draws on our capacity for reflection, calls on our self-awareness of thought, words, and deeds, so to speak. It shines on our moral truth and the pursuit of knowing our own self. First, however, we need viveka, that we can actually see clearly
that we're able to perceive and discern without the contaminants of misperception, of greed, or self-interest. Each act, each thought, every consideration contains the potentiality for doing harm, as well as the potentiality for better good. It requires that we're aware, self-aware enough to see what the impact is at each moment. In countries of advanced capitalism, we purchase items created through cheap manual labour from elsewhere, it doesn't matter where. We don't even notice where it comes from. Yet we remain ignorant, create landfills in the earth for obsolete debris, items we seek to replace over and over without further thought of the impacts or the labour that it took to create these. We are all guilty of this kind of mindless violence. People's livelihood even depends on it. Ahimsa is that call to self-awareness, to the refinement of our lifestyle and awareness to see how we serve the laws of nature rather than taking them for granted or taking all that we can. It's that act of moral discernment in our moment-to-moment decisions, either to care for or to ignore, to preserve or to walk away, to protect or to pretend that it's okay. Ahimsa is the moral thread in the search for truth. We can move against nature, but we suffer the consequences. It is the ongoing dance of self-discipline, awakening to the reality of true values in the world and the consequences of our choices. Ahimsa is inner and outer kindness. It is the respect for oneself, not passivity, but a deep inner conviction. It's a journey that ignites insight beyond the roles and dramas that we play from day to day. It is a reflection on intuition to discover that place of clarity that observes duty and direction whilst treading with the lightest steps of kindness to preserve the future. It is the hero's journey, the hero of 1,000 masks, as coined by Joseph Campbell. It is the pursuit of the golden fleece that delivers a light in the darkness, finding balance and harmony within. It is a guiding law of nature to take exactly what is enough, to share with those that are weaker, to revere the balance that must not be crossed, the cyclical motion of life, death, and renewal, to be respected and revered. There is a pattern language in nature, like the cycle of waves in the ocean, a constant changing and a gracious regeneration in the forces of nature. The yamas and niyamas offer us a manual on ways of living with respect for local and global environs. When we defy the law of ahimsa, we take what's not ours. We commit transgressions that have serious outcomes. Ahimsa is indeed the law of future survival for our younger generation. It is about shining a light on awareness. It is about collective collaboration within our global systems of humanity working with ecology. It is about viveka, the clarity of discernment in understanding and knowing the pattern and purpose of everything. Peace is a state of collaborative action that begins with intention and starts igniting a journey of reflection, observing, then filtering that awareness in all our actions.
Thank you for your kind invitation. Namaste. Thank you, ma'am, for giving your precious time all the way from Australia. It's hard to come even virtually for anyone. Now, the next speaker for today's event is Divyadhara Yogacharya Hemlata ji. She is co-founder at Yoga Sthali Yoga Society, Rajasthan. And she is having 15 years of experience in yoga, highest level 3800 hours, Ministry of Ayush and Government of India certified lead yoga trainer, evaluator, teacher and instructor. Registered yoga teacher, lead examiner of YCV certification board, Ministry of Ayush, Government of India, and she was awarded as the best supporter by the Ayush Department of Rajasthan, India, by Health Minister of Rajasthan for the International Yoga Day celebration in 2017 and selected as social media promoter by Ministry of Ayush, Rajasthan. She is leading yoga teacher by Ayush Department, Rajasthan, and the title Divyadhara has been given to her all because of her exemplary performances she has done in yoga. So I would like to invite Divyadhara Yogacharya Hemlata ji to please come up virtually and address the audience. सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। योगस्ली योगा सोसाइटी जयपुर की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। विशिंग यू वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योग। Yes, in this series many dignitaries, all yoga gurus have shared and motivated us a lot. Subhosh sir, Pujya Swami Chidanand ji, Dr. Atika, and many more. So we can understand and we can feel that how yoga is really working, how yoga can change the complete persona, complete lifestyle. So for that, what yoga is doing, when we are adopting the yogic lifestyle, what yoga is doing? Yoga is bringing the awareness, how we are living our life, how we are acting, and how we are responding, how we are doing action, and how we are doing reaction to the coming situation in our life. So yoga brings awareness. And when the awareness will come, when there should be the connection between our mind and body, body-mind connection should be there. So automatically, we can say that yoga is bringing the harmony in 3 factors. What are that? That is your head, this is first, your heart and your hand. In other words, we can say that yoga is bringing the harmony between your thought process, your feelings, your actions.
And you automatically start giving your 100% at whatever task you are doing. As Sri Krishna says in Bhagavad Gita, Yoga karmeshu kaushalam. Perfection in action. But how we will do that? How we will bring that perfection? We can only bring the perfection in the action when we are completely involved, when we are giving 100% with our actions, with our thought process, with our feelings. So automatically when you are giving 100% at the given task, you will give good results. When you will give good results, automatically happiness will come, satisfaction will come, awareness will come, and you will feel good from inside that yes, I am doing something good. And yes, yoga is bringing in our life mindfulness. Mindfulness means always we are alert, we are aware that what we are thinking and why we are thinking. And is that, yes, true? Is it good or not? So yoga is working at all the levels of our life. Yoga is not only bringing the fitness at our physical level. Yoga is also bringing the fitness at our mental level, at our thought process. Yoga is bringing the fitness at our emotions level. Yoga is bringing the awareness at each step of our life. We become aware what we are doing, how we are responding. So that yoga brings. And when you are doing good work, you are giving your 100%, you will always remain stress-free. And we know that stress is the root cause of all types of sorrow. So, again, samatvam yoga uchyate. Sri Krishna Bhagavan says in Bhagavad Gita, whether you are in difficult phase, whether you are in happy phase of your life, remain always samatvam, balanced. So yoga brings balance in our life. यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में योग के द्वारा आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, तो योग को सही अर्थों में अपनाने की आवश्यकता है। किस तरह से योग एक नियमित तरीके से रेगुलरिटी बनाए रखते हुए कांस्टेंट प्रैक्टिस हमें करनी है। तो अभी हमारे सामने यूथ बैठा है, तो हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि बहुत ज्ञान अभी तक आपने ले लिया और हमने सुन लिया, अब हमें इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए इफ रियली वी वांट टू मेक पॉसिबल ऑल द पॉसिबिलिटीज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, जो भी संभावना है जो हम करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, वो सब कुछ संभव कैसे बनाया जाए, तो योग की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। और योग हमें वो जड़ी बूटी दे देगा। Yoga will give us that awareness, that creativity, that innovative ideas with the balanced mind, with the balanced thought process, with the balanced feelings. That 100% you will give your best in the given task. So, yoga is making all the possibilities possible in your life. योग आपको बताता है कि आपके अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, आपके अंदर कितने सारे पोटेंशियल्स हैं। योग एक आत्मविश्वास दिलाता है, योग एक कॉन्फिडेंस दिलाता है, और साथ में योग अवेयरनेस दिलाता है। फिर जीवन में हम वो गलतियां नहीं करते कि गलती करने के बाद में हमें पता चले ओ वो तो हमें नहीं करना था। तो योग हमें वो सब कुछ देता है जो हम चाहते हैं, जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली हमें उस चीज को अपनाना होगा नियमित तौर से। आप सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि योग को इस तरह से आप पढ़ें, योग को इस तरह से आप प्रैक्टिकली जिएं कि हर एक स्टेप आपका योग में हो जाए। You learn yoga, you implement yoga in your life, and your each and step of your life should be very with full awareness. You should be aware.
and yes, balanced life. योग देना और योग सिखाता है हमें कैसे जीना है। पतंजलि जी ने सेकंड सूत्र में ही हमें बता दिया है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। वृत्तियों का, मॉडिफिकेशंस का, जो माइंड के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, unnecessary thoughts are coming going in our mind, और इतना ज्यादा उथल फुथल यदि हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होगा तो कहां से हम कोई भी टास्क बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि किसी भी टास्क को हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना है, सो एट दैट टाइम योर थॉट प्रोसेस, योर फीलिंग्स, योर एक्शन शुड बी ऑल टुगेदर टू मेक दैट गिवन एक्शन विद द परफेक्शन। तो योग वो कला हमें सिखाता है। दैट्स व्हाई द योग इज आर्ट ऑफ लाइफ। इट्स प्योरली द आर्ट ऑफ लाइफ, बट वी हैव टू लर्न हाउ योग कैन चेंज आवर कंप्लीट feelings, actions, thought process in a very positive way. और ये बात ध्यान रखना, इस मनुष्य योनि के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे। सभी के जीवन में आते हैं, बट हमें उस समय कैसे बैलेंस्ड रहना है वो हमें सीखना है। क्या वो बच्चा कभी अपने आप को माफ कर पाएगा जिसने अपनी मां की हत्या कर दी? बड़ा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, वो समझ नहीं पाया, अच्छे बुरे का ज्ञान उसके पास नहीं आया। इसीलिए हम कहते हैं कि योग जो है वो आपके हर एक लेवल पे काम करता है, फिजिकल लेवल पे, आपकी प्राणा लेवल पे, आपकी मेंटल लेवल पे, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे। जब योग सब जगह कार्य करता है तो अपने आप ही स्वतः ही आप वो कार्य करते हैं जो अच्छा हो, जो सद्बुद्धि की तरफ चले, जो सद्मार्ग की तरफ चले, जो अपने आप में हमेशा हमेशा हमें हर पल हैप्पीनेस फील करवाए, आनंदित फील करवाए। और वो कब करवाएगा? जब जीवन में हम हर एक स्टेप योग में स्टेप लेंगे और अच्छी ढंग से सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे, माइंडफुलनेस हमारे पास रहेगी, अवेयरनेस हमारे पास रहेगी कि whatever we are doing, yes, we are doing in a very good way, in a very positive way. तो वो हमें सीखना है योग से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा सब तरफ हमें माहौल देखने को मिलेगा कि सभी योग की दिशा में बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारी चीजें हम करेंगे, एक अवेयरनेस के जगाने के लिए, एक जागरूकता जगाने के लिए। बट ये जागरूकता जो जगी है वो पूरे साल भर, पूरे जीवन पर्यंत हमारे साथ चलनी चाहिए, तब तो वो सार्थकता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का। हमें वास्तव में आत्मसात करना है, हमारे अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, पॉसिबिलिटीज छुपी हुई, संभावनाएं छुपी हुई हैं, उन सबको सही आकार देना है, उनको साकार करना है योग के माध्यम से, और सही अर्थों में योग को अपना के। केवल योग आसनों के पीछे भागना योग नहीं है। ये ट्रू है कि फिजिकल लेवल से ही मेंटल लेवल की तरफ आप आओगे, और एकदम यदि आपको कह दिया जाए कि आप ध्यान की अवस्था में चले जाओ, आप मेडिटेशन की अवस्था में चले जाओ, ऑल ऑफ सडन इट विल नॉट पॉसिबल फॉर यू। एट दैट टाइम यू विल स्ट्रगल विद योर थॉट प्रोसेस, यू विल फाइट टू गेट दैट प्योर स्टेज ऑफ मेडिटेशन। सो यस, asanas are necessary to do, to go from physical level to mental level, but in one asana you can enjoy the complete Patanjali 8 steps, Ashtanga Yoga. So yama niyama means self control and whatever duties you are doing, बिल्कुल बैलेंस वे में करते हुए आप यम नियम का पालन करते हुए आप आसन करें, प्राणायाम करें। चले वात चले चितम, तो वात मतलब आपकी जो ये श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है, ये जितनी सामान्य तौर पे चलेगी, सहज भाव से चलेगी, और उतना ही आप मेंटली बैलेंस्ड रहेंगे। तो हर एक लेवल पे आपके इफेक्ट करता है योग। तो स्वतः ही आप पूरे जब प्राणायाम करेंगे आसनों के बाद में, तो स्वतः ही आपका बॉडी और माइंड का एक वातावरण क्रिएट होगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा
धारणा के लिए। जहां जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उस ऑब्जेक्ट पे आप धारणा स्थापित करेंगे, आप फोकस करेंगे, अपने कंसंट्रेशन को आप लेके जाएंगे। फिर धीरे 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 उस ऑब्जेक्ट के साथ में जब आप इतने फोकस्ड होकर देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट के साथ में जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, एट दैट टाइम यू आर स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द meditation, pure meditation. Then you will feel inner blissfulness, happiness inside you. So that you brings in our life. तो हमें ये समझना है कि योग एक बहुत बड़ी जीवन का विज्ञान है जो हमें जीना सिखा देता है, जो हर एक स्टेप में हमारी बहुत मदद करता है यदि हम अच्छे ढंग से, सही रूप से, सही तरीके से योग कर रहे हैं और वो निरंतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में आके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है बस इन्हीं दिनों करें, ऐसा नहीं। प्रतिदिन निश्चित समय अपना सेट करें और तब आप योग करें। आप सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि योग को अपने जीवन में प्रैक्टिकली आप अपनाएं, इस्तेमाल करें और जीवन का हर एक स्टेप आपका योग में हो या आपकी अवेयरनेस हो। ऐसा नहीं कि भावनाओं के वशीभूत होके या नेगेटिव थॉट्स के वशीभूत होके आप कोई भी कार्य कर जाए। अवेयरनेस शुड बी देयर, अलर्टनेस शुड बी देयर, व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम रिएक्टिंग, हाउ आई एम रेस्पॉन्डिंग। सो दैट अवेयरनेस, वो जागरूकता योग हमारे जीवन में लेके आता है। विशिंग यू वेरी गुड लक। उठो, जागो और एक बहुत अच्छे जीवन का, एक बहुत अच्छे ऊर्जावान, नई उमंग, नई चेतना से भरे हुए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। योग को अपनाओ और इसको संभव आकार दो, इसको साकार आकार दो। जो भी सपने, जिन भी ऊंचाइयों पे आप उड़ना चाहते हैं, योग के माध्यम से वहां तक पहुंचने में आपको बहुत आसान तरीके से वहां तक आप पहुंच पाओगे, अपने लक्ष्य को पा पाओगे। Wishing you very good luck, all the very best, and I would like to give my heartfelt thanks to हिमांशु जी, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और सभी को इतने बड़े बड़े रिनाउंड, हाईली एक्सपीरियंस्ड योग गुरु जो आज हमने देखने को मिले, उन सभी को आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। सभी ने अपने अनुभवों के माध्यम से योग क्या कर सकता है जीवन के अंदर, वो साझा किया, बताया और उसको हमें आत्मसात करना है जीवन में। जिन्होंने एक अनुभव लेके, क्योंकि योग अनुभव की चीज है, किताबों में योग नहीं है। प्रैक्टिकली आप जब योग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग, जो योग से हम, जिस चीज को लेके योग के लिए हम योग को अपना रहे हैं, उससे कई गुना योग आपको दे रहा है हर एक लेवल पे। तो उन्होंने एक्सपीरियंस को शेयर किया, सबको आपने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। हरिओम। थैंक यू सो मच। I would like to give my heartfelt thanks to हिमांशु जी, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और सभी को इतने बड़े बड़े रिनाउंड, हाईली एक्सपीरियंस्ड योग गुरु जो आज हमने देखे। Thank you, ma'am. 360-degree yoga, yoga in your life. एक saying है, add years to your life and life to your years. Add years to your life and life to your years just by embracing yoga in your life. This is what ma'am said. Yoga is not a small term or anything to be practiced in a day. What we are listening from morning till afternoon is about yoga is not a one-day event. Right? We have to practice it. We have to practice all forms of yoga, meditation, spiritual things, and diet followed by
yoga people and see the change in your life, the science of being youthful, the science of integrating your body, mind and soul is all here in yoga and meditation. So you will be feeling fit. There is again saying, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. Here we can say योगा करेगा इंडिया तभी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, और स्वस्थ रहेगा तो बहुत कुछ करेगा. And of course that boy who killed his mother, उसने अपनी खुशी से तो नहीं किया होगा और जिंदगी भर पछतावा रहेगा. तो all because of imbalances या अटैचमेंट या इमोशनल आउटब्रेक की वजह से ये चीजें हुई. अगर योगा रहेगा लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. So it's not a day to celebrate International Yoga Conclave in a day or two. We have to celebrate it every day in our life. Practice कीजिए, feel कीजिए, and art of living से we can make our life, like heaven on the earth. स्वर्ग को धरती पे उतारना है, खुद को इस मनुष्य जीवन में कुछ पाना है, तो योगा और मेडिटेशन को हम लोग अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं. इवन आई नो मच अबाउट योगा. ये नहीं पता था कि स्पिरिचुअल सेइंग्स अपने दिमाग को अगर हम ऑर्डर करेंगे कि आप फिट हो, आप फाइन हो, तो वो वैसा ही रिएक्ट करेगा. दैट आई केम टू नो इन दिस सेमिनार. सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर हिमांशु पांडे जी, Editor-in-Chief, Youth News Online, to please thank the audience and everyone for vote of thanks. Thank you, Alankrita. Thank you for making this event a very beautiful event altogether. We are especially thankful to the audience to begin with. We are thankful to the Vyasa University, the Art of Living Foundation, Sarva Yoga International, Resonance, Adhyatma Yoga Kendra, Brahma Kumaris, Soham College of Naturopathy, Shivananda Yoga Vedanta Nataraja Center, Global Institute of Blissful Life, Instruction, Security and Service on Blissful Life, Ekam Yoga, Vyasa Canada, the Hindu Temple Burnaby, European Yoga Federation. These are our partnering organizations that supported this event to make it a very beautiful event. Doon Vidyapeeth, Dehradun, Yoga Vidya Dham, IC Ayer Ananda Ashram Pondicherry, Purna Yoga Advaita School. This program is streamed live on www.tinyurl.com/youthnews1234. We are especially thankful to our this event hosted by Indian Yoga Association in association with Paramatniketan Ashram, Haridwar and Youth News Online in collaboration with IQAC of Delhi College of Art and Commerce chapter. We are thankful to every of our speakers who joined us today and made this event a great success all. We are thankful to Mr. Himanshu Sharma to begin with, who sang so well and performed to begin this evening. We are thankful to Dr. H.R. Nagendra, Padam Shri, Chancellor Vyasa University. We are thankful to Param Pujya, His Holiness Swami Chidananda Saraswati Ji, founder of Paramatniketan Ashram. We are thankful to Ishwar V. Vasareddy, Director, Muraji Desai National Institute of Yoga. We are thankful to Subodh Tiwari Ji for joining us all the way from Kevala Dham. He is the Chairman Kevala Dham, also the Secretary General for Indian Yoga Association. We are thankful to Atika Dandia, Senior Art of Living Teacher and a TEDx speaker, a motivational speaker from inside. Professor Rajiv Chopra, the Principal, Delhi College of Art and Commerce. We are thankful to Dr. Suresh Lal Barwalji, Dean Yoga and Health Department, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar. We are thankful to Suresh Barwalji as well as Dr. Ishwar Bharadwaj, Dr. Ishwar Bharadwaj, Dean Academic Affairs, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar. Dr. B.R. Sharma, Vice Chancellor, Sri Sri University. Mr. Antonetta Rosie, President, Sarva Yoga University. Sri P.C. Kapoor, Direct Finance Committee, also from Indian Yoga Association and Director, Sivananda Yoga Vedanta Nataraj Center. We are thankful to Kareen Shelshire. We are thankful to Yogdhara, Hemlata Sharma Ji, Co-Founder, Director, Yoga Sthali Yoga Society. We are thankful to everyone for joining this evening. We are especially thankful to all the faculty, member, staff of this college who supported us well. We are thankful, especially thankful to the Mangalam University. We are thankful to the Mangalam College of Management as well as NIEM for making
NIEM Delhi chapter for making this event a great success. We are thankful to none other than everyone out here present, especially from DCAC students who joined us. कल भी सेम आज की ही तरह बहुत ही अच्छा इवेंट होने जा रहा है. आए हुए सभी अतिथियों का एक बार मैं सिर्फ उससे पुनः स्वागत करते हुए और वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करता हूं. और कल का भी कार्यक्रम सेम 10 बजे हम लाइव करेंगे. आप सभी से अनुरोध है, और जो लोग यहाँ आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि ये इंडियन योगा एसोसिएशन के पेज पर और हमारे पेज पे लाइव है. आप उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में कल के कार्यक्रम का पार्ट बनिए. कल में भी बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं, और इस इवेंट को ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस से जो ये इवेंट निकल के जा रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनली टेलीकास्ट इवेंट है, और इसके सर्टिफिकेट की इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू है. तो इट इज अगेन अ वैल्यू एडिशन टू यू ऑल. सो यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट हियर इटसेल्फ. सो ऑल आर इनवाइटेड. जो लोग लिंक से हमें जूम के थ्रू या किसी भी मीडियम से देख रहे हैं, वो लोग भी सर्टिफिकेट्स, उनके रजिस्ट्रेशन हम तक आ गए हैं. हम उन तक सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन देंगे, और जो यहाँ रहेंगे कल प्रेजेंट, उनको हम यहीं से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. स्टाफ से जो भी यहाँ पर हैं DCAC कॉलेज से, उनसे मेरी गुजारिश है कि कल सारे स्टूडेंट्स रहें, तो हम सर्टिफिकेट वहीं पर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पर भी वर्चुअली फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Thank you so much for joining us. Thank you for making this event a memorable and a great success ahead. Thank you. Thank you, sir. And with this note, we'll be winding up today's session. Tomorrow, at the same venue, at the same time, we'll meet again. Till then, Namaskar, Shastriyakal, Adab from International Yoga E-Conclave team. Thank you.